अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम रिव्यू करेंगे Oppo Reno 14 5G। ये फोन अभी लॉन्च हुआ है और Oppo ने इसके AI फीचर्स और डिजाइन की बहुत हाइप क्रिएट की है। इस रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे इट्स बैटरी लाइफ, गेमिंग, AI फीचर्स और बहुत कुछ। So let's dive in. So let's first unbox this. This is the Oppo Reno 14. Okay, let's open the box. So here we have the phone itself, Oppo Reno 14. We have the Super VOOC adapter. This is 80 watts. We have the cable here. यहाँ पर ये SIM tray opener है. So this is what was inside the box. सबसे पहले आता है the quick guide. Then we have the plastic cover, which I told you it's pretty sturdy, तो काफी safe रखेगा आपके phone को. Then we have the Super VOOC 80 watt charger. We have the Type-C cable, and then we come to the real deal, the Oppo Reno 14 5G. Let's open this. Okay, wow. This is the phone. You can see the back. Oppo has now introduced the iridescent mermaid design, और ये है opal white में. Let's switch it on. So I think the first thing that anyone looks at is the design, and Oppo is excelling at it. और आप देख सकते हैं कि कोई normal glossy back नहीं है. I have the opal white variant and it's so beautiful. You can see the color shifting over here. एक और variant है which is the luminous green, and I think both of them are equally beautiful. फ़ोन की thickness की बात करें, it's pretty slim, it's pretty lightweight, it's only 187 grams. So आपको पकड़ने में काफ़ी light महसूस होगा. The best thing is कि this phone is IP66, IP68 and IP69 rating. इसका मतलब है कि ये मिट्टी, पानी और pressure spray को बर्दाश्त कर सकता है. Now let's talk about the phone's display. The phone has 6.9-inch AMOLED display and 120 Hz refresh rate. Brightness भी काफ़ी तेज़ है. इसका मतलब अगर आप बाहर हों harsh sunlight में, तब भी आपको इतना ही क्लियर नजर आएगा जितना आपको अभी नजर आ रहा है. The phone also has splash touch और glove mode, यानी अगर आपने gloves पहने हुए हों या अगर आपके हाथ गीले हों, तब भी टच इतना ही स्मूथ होगा जितना कि अभी है. Now let's jump straight into cameras. The main camera is 50 megapixel. The telephoto camera is also 50 megapixel, and the front camera that's also 50 megapixel with autofocus. यानी selfies तो crisp आनी ही है. And this is the AI eraser. This is a picture I captured. अब हम जाएंगे edit पे, and you see an AI editor. You go to AI eraser, और अब हम यहाँ से इसको पूरा circle कर लेंगे. This is the object I wanted to remove, and now we'll wait. And voila, it's gone. The picture is perfect. This is before, this is after. Another interesting feature is the AI perfect shot. जैसे इस picture में the eyes are closed. अगर हमें इसी को improve करना हो, then we'll go to edit, AI editor, और यहाँ पर है AI perfect shot. We'll click this, okay, and now it's detecting. Okay, now we have few options, all with the eyes open. Whichever you think is perfect, we'll choose this. I'll choose this and done. Now this is before and this is after. और अगर अंधेरे में पिक्चर लेनी हो, the night photography mode is spot on. Let's check. क्या कोई कह सकता है ये पिक्चर रात में ली गई है? इसके अंडर वाटर फोटोग्राफी मोड के जरिए आप 2 मीटर तक 30 मिनट्स के लिए अंडर वाटर शूट कर सकते हैं. Isn't that something? For gamers, this one has MediaTek Dimensity 8350 chip with 12GB RAM and 256GB ROM, which makes your gaming experience super fast and easy. Let's check that out. इस फोन में गेमिंग हाईलाइट्स के जरिए आपके किल्स या इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाते हैं. यानी अगर आपको YouTube या किसी और प्लेटफॉर्म पे उसे अपलोड करना हो, इट बिकम्स सुपर इजी. एंड इफ यू प्लेइंग गेम्स लाइक PUBG, फुटस्टेप साउंड बूस्ट से आपकी ऑडियो क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, व्हिच मेक्स योर गेमिंग एक्सपीरियंस अ लॉट बेटर. इफ यू लुकिंग टू यूज द फोन फॉर लॉन्गर आवर्स, द फोन हैज 6000 mAh बैटरी जो आराम से 2 दिन चल जाती है फॉर मॉडरेट यूज. प्लस द फोन हैज 80 watt सुपर वोक चार्जर जो 10 मिनट में ही फोन को 12+ आवर्स का बैकअप देता है. अब बात करते हैं इस फोन के AI फीचर्स के बारे में जो आपके डेली यूज को और प्रोडक्टिव करेगा. Features like AI call summary, AI call translator, voice scriber and Gemini are few of them. Let's check them out. अब हम इस फोन का एक AI फीचर टेस्ट करेंगे, the AI translator. For that I'll go to gallery and look at this picture. Now you can see that it's not in English, it's probably in Russian. हम यहाँ पर जाएंगे, we'll press on to the home button and we'll see the translator feature. तो press करेंगे
And here you go. When you press this, you select English and you see that it's been translated into English. Also, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके जहन में कोई गाना हो but you just can't figure out what song it is? With Oppo, you can now do that. So the Gemini feature allows you to hum a song or sing it and while it detects what it is. Let's try it. So we press the home button, go to this feature, and now we sing. Dear Lord, when I... And it's here, it's young and beautiful. From its camera quality to its sleek design, AI features, and so much more, everything meets your expectations. So if you want a phone that not just looks good, but also performs great, this one is for you. And if you like our video, please subscribe to this channel, like the video, and comment below. Which feature did you like the best?